Hello everyone, very good afternoon. Let me unmute everyone. Okay. Hope you are able to hear me and you are able to see me everyone. Very good afternoon. Can someone speak please? Good afternoon, sir. Good afternoon. So, hi Vishal, hi Virendra, Nitya, Lohit. Still people are joining. Nishtha, Bunty, and who else? Manjishta, and again someone else. So, welcome everyone. So, today, as I said, we are going to start a new topic. Today, we are going to talk about today next few sessions. We are going to talk all about probability. Now, probability is not a new topic in class 12, right? From class 8th or 9th, different board, probability is introduced, right? Class 8, 9, 10th, 11th, and then 12th. So, I am not going to do any basics, very basics of probability. I am not going to do that, but I am going to explain you the key concept which is useful for class 8 to class 12 or IITG probability, because you should be very crystal clear about each of the concept of probability, and then we are going to solve a lot of problems today and in the next week. Okay, so make sure your concept are crystal clear, what each thing means. That will be very useful to solve probability. Probability is not difficult. The good thing about probability is many problems of probability you can solve in 10 seconds, 20 seconds, or maximum 30 seconds. Most of the problems in probability. Good thing is time is not a problem. Probability can be done very fast. But the biggest problem with probability is, since it is too fast, I'll say easy, not much calculation. Many times it happens that you do wrong also very fast. You get answer in 10 seconds, but maybe wrong. So it's all about reasoning. The probability is a kind of a modern maths. So we have to apply a little bit of logics. Okay, that's it. So let's start. Let's make it interactive. I'm going to ask you questions. You're going to answer on the chat or answer on the audio. So as usual, let's start. First of all, what is the probability? What do you mean by probability? Or before that, before we say anybody on audio, what do you mean by probability? Very fast, 10 seconds. So possibility of occurrence of event. Possibility of occurrence of an event. Possibility. See the word. Possibility of occurrence of an event. Good. And we always say random experiment. No, what do you mean by random experiment? That is the way I am going to explain you the key concept. When you say random experiment, means what? What do you mean by random experiment really? Anybody? Continuous experiment. Where the outcome is not sure. Not necessary. Okay. Outcome is not sure, no. Continuous experiment. Is it really just continuous thing? Okay, no. Anybody else? Random experiment. Random experiment, that experiment, yes, you would say outcome is not sure, but in other way, it's not about outcome is not sure. Your outcomes are always defined. So random experiment is those experiments where, sorry, tell me, Nishta. Sample set is not defined always. No, Like sample what set is, no, sample set is defined. I'll tell you how. Random experiment are those experiments which are, you can say, when your environment and conditions are same. It is not in the favor of something. When environment or conditions are same, and then you are doing the experiment. For example, you are tossing a 1 rupee coin or 2 rupee coin or 10 rupees coin which is not biased. You know that in any condition, it's not that okay in morning or evening or different geography or different place or different way. In particular way you get more outcomes of one way. No, it's always, it's a random. Means it's not that chance of occurring of certain type is more and chance of occurring certain type is less. No, it's a total random experiment, but conditions are same and you still get different outcomes. Like you toss a coin, right? If coin is not biased, you get head or a tail. If it is random experiment, yeah, if it is not random experiment, certain things you are putting where okay, you know certain events comes more, that is not random.
Random experiments are more when conditions are same and you get random outcomes. Yes, there will be sample space will define, but you get random outcomes. Okay, conditions are same. That's the point. Condition and environment is same, and outcome of those. Now, what do you mean by? We'll talk about lot of things. Event. Sir ji, please repeat this statement again. See, random experiment is those experiments where environments are same or conditions are same, and still you get different results. Like, to make dice को, you are rolling the dice. You are not changing the environment. कि तुमने अभी पहले ये वाला डाइस लिया, फिर दूसरा टाइप का डाइस लिया, फिर तीसरा टाइप का डाइस लिया. उसमें तो environment changing, तो different हो सकता है, right? But random experiment में environment is same. You are using same dice. Outcomes different आएगी. Or different, like dice में से outcome आ सकते हैं, right? 1, 2, 3, 4. Yes, yes. That's a random experiment. But आप environment control कर दो कि नहीं, मैं डाइस को ऐसे उछालूंगा, ऐसे आऊंगा, तो वो फिर वो जरूरी नहीं हर बार 6 आए, उसका 1 से 3 तक ही आए. डाई को आप एक अलग से उछालो, वो random experiment हुआ. रैंडम में कि कोई आप एक पर्टिकुलर आउटकम पे आप यू आर नॉट फोकसिंग और फोर्सिंग इट आउट. इट्स रैंडम एंड आल्सो यू आर नॉट चेंजिंग द कंडीशंस. समझ में आया? नेक्स्ट. Yes, sir. Event. What is the event? Tossing a coin is an event. Rolling a dice is an event. Picking a card from the deck of cards is an event. Picking a ball is an event, right? Outcomes. जो आउटकम आते हैं, जैसे कि वी टॉक अबाउट, पीपल आर ज्वाइनिंग स्टिल, ओके, सो वी टॉक अबाउट, सपोज से गेटिंग ए हेड इज आउटकम, गेटिंग ए टेल इज एन आउटकम. सपोज रोलिंग ए डाइस, आउटकम कैन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are all outcomes. And something is called sample space. We are going to talk a lot because in class 11th and 12th, there are a lot of things about sample space. 8, 9, 10th class में डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी है, सैंपल स्पेस के बारे में कम है. 11th and 12th they lot thing about sample space. We are going to talk about, we are going to do some problem on sample space in deep, at least 3-4 questions. What do you mean by sample space? कोई बताएगा? Sample space बहुत सिंपल है. बंटी, निष्ठा, विरेन. Set of all elements, set of all events. Set of all events or Yes, outcomes. sir. Yes, sir. सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ. मैंने एक कॉइन टॉस किया, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो दोनों मिला के बन गया सैंपल स्पेस. मैंने इफ आई रोल्ड अ डाइस, 1 डाइस, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. 1, 2, दिस इज सैंपल स्पेस. Exhaustive set of all outcomes together, all outcome not together, all outcome is sample space. But sample space is easy नहीं है. I'll tell you, we'll make it more complex now. But let me define first the core concepts of this. Random experiment, event, outcomes, sample space. Now, event में भी different types of event होते हैं. Event also, we are going to do problems later. But mutually exclusive event. क्या होता है? कौन बताएगा? With exact definition, मतलब बुकी डेफिनेशन की नहीं चाहिए हुए, जो समझा सके कि एग्जांपल से. व्हाट इज जब उन दोनों के अंदर भी, उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन ना रहे. other way of saying this, yes. Anybody else? English, Hindi guys, anything. It's a very very open class. Mutually exclusive event क्या होते हैं? जितना अच्छा समझोगे ना, is good for your 11th 12th and IIT. Or we can say that. अच्छा, लोहित बोलो. 2 इवेंट में कोई कॉमन मतलब कुछ नहीं है सर. अच्छा, बंटी तुम बोल रहे थे कुछ? If 2 events, if we have 2 events A and B, then their intersection equals to 0. Okay, no, okay, you are using the, you can say mathematical definition, fine. Yes, Nishta? They're independent. इंडिपेंडेंट और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव अलग चीज है. मैं बताता हूँ क्या होता है. 2 डिफरेंट वेज. मैं आता हूँ उस पे भी. इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, हम आएंगे उस पे. और एनीबडी एल्स? जय सूर्या? Two events are disjoint sets. फिर वो मैथमेटिकल आ गया. 2 जॉइंट डिस्जॉइंट, वो सब बुकिश पे हटो, बुकिश से हटो लोग. एक प्रैक्टिकल वे में बताओ. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं, लिसन केयरफुली. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोज इवेंट, अगर एक इवेंट हो रहा है तो इट विल प्रिवेंट द अदर इवेंट. जो किसी ने बोला है दोनों साथ नहीं हो सकते, कॉमन नहीं हो सकते, लेकिन उसको ध्यान समझो.
occurrence of one event avoids the occurrence of another event. बहुत सिंपल सा है. मैं एग्जांपल दूंगा, 2 या 3 एग्जांपल दूंगा, you'll understand. Occurrence of one event avoids the occurrence of another event. For example, मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, हेड आ रहा है. अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आने देगा, राइट? तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो गया. अगर हेड आ गया तो टेल को नहीं आने देगा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो गया. डाइस की बात करते हैं. डाइस को रोल कर रहा हूं, अगर ऑड नंबर आया तो इवन नंबर नहीं आने देगा. ये क्या हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. बट फिर से मैं डाइस रोल कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं मेरा इवेंट है गेटिंग ए प्राइम नंबर एंड ए ऑड नंबर. ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है. दोनों हो सकते हैं, राइट? हो सकता है कि नहीं? प्राइम नंबर भी आ जाए और ऑड नंबर भी आ जाए, 3 आ जाए, दैट इज नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोज इवेंट्स एक के आने से वो दूसरे को नहीं आने देगा. occurrence of one event avoids the occurrence of another event. पिकिंग ए कार्ड की बात करते हैं. डेक ऑफ कार्ड्स 52 कार्ड्स. मेरा इवेंट है गेटिंग ए रेड कार्ड. अगर गेटिंग ए रेड कार्ड इवेंट है तो गेटिंग ए ब्लैक कार्ड इज गेटिंग ए रेड कार्ड, गेटिंग ए ब्लैक कार्ड, बोथ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अगर रेड आएगा तो ब्लैक नहीं आएगा, करेक्ट है? और अगर ब्लैक आएगा तो रेड नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर अनदर वन सेट ऑफ 52 कार्ड्स, मेरे माय इवेंट इज पिकिंग ए डायमंड कार्ड. अगर पिकिंग डायमंड कार्ड तो पिकिंग हार्ट्स, पिकिंग स्पेड, पिकिंग दिस ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. लेकिन सेम केस आई विल टेल यू अबाउट कार्ड्स. 52 कार्ड्स, इफ आई से पिकिंग ए डायमंड कार्ड एंड ए रेड कार्ड, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. हो सकता है डायमंड भी आए और रेड भी आ जाए, क्योंकि डायमंड रेड होता है, करेक्ट? गेटिंग द आइडिया व्हाट इज द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव? एवरीबॉडी इज ओके? बिकॉज ये देखो, डेफिनेशन समझोगे ना तो जब सारे क्वेश्चन करोगे, यू नो कि व्हाट इज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, व्हाट इज इंडिपेंडेंट, व्हाट इज डिपेंडेंट, व्हाट इज एग्जॉस्टिव, व्हाट इज ऑल दिस. ओके, सो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, occurrence of one event avoid occurrence of another event. Anybody want to give me 1 or 2 more examples quickly? Fast, anyone? Virendra, you want to say something? Anybody? Nityashri, कोई और कोई एग्जांपल? फटाफट, फास्ट गाइस. नो? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट. दीदी सर जी आपने तो नहीं, मैंने सारे नहीं दिए, एग्जांपल लाखों होंगे, बट ठीक है, इट्स ओके. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट. एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब कि सारे इवेंट का सेट. जैसे कि मैंने सपोज लिया डाइस, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, ये सारे का सेट हो गया एग्जॉस्टिव इवेंट. ऑल द आउटकम्स का, ऑल द इवेंट्स का हमने सेट ले लिया तो हो गया एग्जॉस्टिव इवेंट. सिंपल है. अब आते हैं इंडिपेंडेंट, जो बात कर रहे थे निष्ठा, राइट? इंडिपेंडेंट. सर जी एग्जिस्टिव इवेंट को एक बार रिपीट. एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब ऑल द इवेंट्स को इकट्ठा कर दो. जैसे डाइस लिया तो वन इवेंट इज गेटिंग वन, सैंपल स्पेस आ जाएगा अपने पास में. हाँ, तो वो सेट ऑफ ऑल दिस एग्जॉस्टिव इवेंट कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है. इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है गाइस? वेरी डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इंडिपेंडेंट इवेंट, एनीबॉडी जो फटाफट बोलो, गलत सही का इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे. हम लोग वी आर नॉट टेकिंग टेस्ट, हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं. जो दूसरे इवेंट में डिपेंड नहीं करता, मतलब ओके, हाँ, नाम से भी पता पड़ रहा है इंडिपेंडेंट. क्या डिपेंड नहीं करता है? मतलब उसका आउटकम्स, उसके आउटकम्स. आउटकम ऑफ वन इवेंट इज नॉट डिपेंड ऑन आउटकम ऑफ अनदर इवेंट. वो होता है इंडिपेंडेंट इवेंट. फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लो. मैंने सपोज एक डेक ऑफ कार्ड्स है 52. देखो वापस वही एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन डेक ऑफ कार्ड है 52. अब उसमें 3 तरीके होते हैं, मैं लिखूंगा यहाँ पे. कोई भी कार्ड हो, बॉल्स हो, कुछ भी हो, दे आर ऑलवेज 3 वेज. एक होता है पिकिंग समथिंग टुगेदर. अगर मैं 2 कार्ड साथ में निकाल रहा हूं तो बात ही अलग है, वो हम लोग बाद में करेंगे. बट इफ आई एम पिकिंग वन आफ्टर अदर, ध्यान से सुनो, आई एम पिकिंग 2 कार्ड्स फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स. आई एम पिकिंग 2 कार्ड्स वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक. और उसमें 2 कंडीशन है, विथ रिप्लेसमेंट
विदाउट रिप्लेसमेंट। ध्यान से देखो, विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। हम बात करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब क्या? 52 कार्ड्स है, एक कार्ड निकाला, देख के रख दिया, वापस नहीं रखा, फिर दूसरा कार्ड निकाला। अब मैं बोलूं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग कि दोनों कार्ड ब्लैक आए, तो देखो रिप्लेसमेंट में नहीं कर रहा हूं, 52 कार्ड्स है, एक कार्ड निकाला, सपोज वो ब्लैक आ गया, अब दूसरी बार निकालूंगा तो दूसरी बार जो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, राइट? क्योंकि एक तो ब्लैक आ चुका है, राइट? तो डिपेंड कर रहा है इसमें कि नहीं कर रहा है। पहले 52 कार्ड्स थे, अब 51 रह गए। पहले ब्लैक 26 थे, अब 25 रह गए, राइट? तो सेकंड टाइम जो ब्लैक निकालूंगा वो डिपेंड करेगा कि पहली बार में ब्लैक आया कि नहीं, डिपेंड करेगा उसमें कि नहीं करेगा। यस सर। उसे डिपेंडेंट इवेंट, क्यों? occurrence of this depends upon, or outcome of this depends on outcome of the first event। तो ये क्या हुआ? डिपेंडेंट। लेकिन सेम क्वेश्चन को अगर मैंने अलग बना दिया, पिकिंग 2 कार्ड्स वन आफ्टर अदर विथ रिप्लेसमेंट, एक कार्ड लिया, देख लिया, वापस रख दिया, फिर वापस दूसरा लिया, इस केस में क्या होगा? पहले केस में ब्लैक आया, रेड आया, फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड केस में बराबर चांसेस वापस हो जाने के, क्योंकि मैंने रिप्लेस कर दिया। ये हुआ इंडिपेंडेंट। आउटकम ऑफ द सेकंड ऑकरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन ऑकरेंस ऑफ द फर्स्ट, वो हुआ इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट जहां आउटकम डिपेंड करे, इंडिपेंडेंट जहां पे आउटकम डज नॉट डिपेंड करे। क्लियर है? इंडिपेंडेंट इवेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट में आउटकम डजंट डिपेंड ऑन द ऑकरेंस ऑफ द फर्स्ट और अर्लियर केसेस। ये होता है डिपेंडेंट इवेंट। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे थोड़ा आज, थोड़ा नेक्स्ट क्लासेस में, बट experiment, event, outcome, sample space, types of event. Clear everyone? CC? So I am going to ask you many questions on sample space now. Clear है यहां तक? और probability, किसी का भी probability डिपेंड किस पे करता है? टोटल आउटकम कितने हैं? Probability is always in any case is टोटल आउटकम्स, किसी भी इवेंट के टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, और हमको क्या चाहिए? फेवरेबल आउटकम्स। मैं बहुत समरी में बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियोस है जहां पे मैंने पूरा बेसिक पढ़ाया है। मेरे पास 1-2 घंटे की वीडियोस है, वहां पे पूरा मैंने प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व किए 1 घंटे में, 100 क्वेश्चन, वेरी फास्ट, 10-5 सेकंड्स। सो इफ यू वांट यू कैन स्टिल गो फॉर इट सो दैट यू गेट अ वेरी गुड बेस। अगर किसी का बेस वीक है प्रोबेबिलिटी में, सो यू कैन गो टू वीडियो। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट हाई लेवल क्वेश्चन की बात करेंगे, वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल समझाता हूं। ये मेरा इवेंट है टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स। अनबायस्ड है, रेंडम एक्सपेरिमेंट, वो एज्यूम करो जब तक मैं नहीं बोल रहा हूं। टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? देखो एक कैसे ऐड होते हैं, देखो उसका भी फंडा है। एक कॉइन के कितने आउटकम होते हैं? 2। तो इसको ऐसा देखो, ये बोलने का तरीका है, एक कॉइन के आउटकम होंगे 2, हेड या टेल, और 3 बार टॉस कर रहे हैं या 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं, एक ही बात होता है, तो पावर 3। 2 कॉइन होते 2 टू द पावर 2, 4 कॉइन होते 2 टू द पावर 4, n कॉइन होते 2 टू द पावर n। 2 क्यों? क्योंकि एक आउटकम के 2, एक कॉइन के 2 आउटकम होते हैं, तो 2 टू पावर 3। सो टोटल आउटकम्स तो 8 ही होंगे। टोटल आउटकम्स आर 8 हर केस में। इस क्वेश्चन में जब भी मेरा इवेंट है टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स या टॉसिंग 3 कॉइन साइमल्टेनियसली, एक ही बात है, तो टोटल आउटकम्स तो 8 ही होंगे। अब बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन लेट मी राइट कि 8 आउटकम्स क्या होंगे। उसका भी एक सिंपल सिमेट्रिक वे है कि सपोज पहले में हेड आया, दूसरे में हेड आया, तीसरे में हेड आया। पहले में हेड, फिर एच टी, फिर एच, फिर टी एच, फिर एच टी टी। मैंने हेड फिक्स करके बाकी चारों लिख दिए, तो यू विल नॉट फॉरगेट। पहले में हेड आया और बाकी 2 में चेंज करा हुआ, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, हो गया। अब फिर करते हैं, पहले में टी टी टी, टी को फिक्स कर दिया, टी एच, दिस, हो गया 8 आउटकम, राइट? नो कंफ्यूजन एट ऑल। 3 कॉइन्स या 1 कॉइन 3 टाइम्स, टोटल 8 आउटकम्स। ये सबको क्लियर है? दीज आर द 8 आउटकम। इसको अगर आप कर्ली ब्रैकेट में और कॉमा से सेपरेट लिख दोगे तो बन जाएगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हैविंग 8 आउटकम। सो अब अगर मेरा क्वेश्चन ये है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बना नहीं है,
If my question is this, what is probability getting? At least. So at least बाद में करेंगे. 2 heads. Yes, Jashuriya, we'll talk in English also, Hindi also, both mix. So, what is the probability of getting 2 heads? So, it's exactly 2 heads. Neither less, neither more. Exactly 2 heads. So, exactly 2 heads, favorable, favorable, favorable. 3 outcomes are favorable to our thing because we need 2 heads exactly. So, there are 3 outcomes which are favorable to us. So, probability is 3 by 8. That's it. But, if I change the question now, let me change the question now. Let me remove this. And guys, take notes. I as well said keep taking notes. If I ask what is the probability of getting at least 1 head. At least 1 head means what? Either 1 head or 2 head, all 3 heads, right? At least 1 head. Then what will probability, Jayasuriya? Probability of getting at least 1 head. At least 7 by 8. Sorry? 7 by 8. 7 by 8 because except, please mute, except this, all other outcomes are favorable because at least 1 head means 1 head or 2 head or 3 head. So 7 by 8. If I ask you a question, everybody write, what is probability getting heads more than tails? Tell me everybody quickly on chat. We are going to come to sample space after this. Probability of getting heads, number of heads more than number of tails. Fast. Probability getting heads more than tails. 1 by 4, okay. Others please. Number of heads more than number of tails. देखो क्या क्या होगा. What all I 1 by 2. 1 by 4 or 1 by 2? 1 by 2. Check. Everybody check what I'm saying now. Heads more than tail. Head is more than tail. Yes. No, you might be saying, sir, यहाँ पे tail नहीं है. Yes, but heads are more than tail. 3 heads, 0 tail. So it is still more. 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 Obviously, there would be not 3 by 4. 4 outcomes are favorable out of 8 outcomes. 4 by 8 or half or 50%. Correct? Probability is not 3 by 4, probability is not 1 by 4, probability is 1 by 2 or 4 by 8. Out of 8 outcomes, half of the time heads will come more, half of the times tail will come more. Natural, right? Simple. If I change the question one more last time, and if I say, what is the probability of getting number of heads equal to number of tails, Manjishta and Nishtha? What is the probability? Probability of getting heads equal to tails. Nityashri. 0. Because either heads will come more or tails will come more. 0 because it is not possible, and that is why we call them it is impossible event. Impossible event where probability is 0. In this case, getting heads and tails, number of tails and heads equal, not possible. So it is 0. Similarly, if I say, take anything, suppose I roll a dice. I roll 1 dice and I say, probability of getting number lesser than 7. Tell me. 1. If I roll a dice and I say, what is probability of getting a number less than 7? 1. So that probability would be 1. We call them sure event. कि होना ही है 6, 7 से नीचे ही आएगा जो आएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6. 6 by 6, right? Understood? Sure event, impossible event. Obviously, probability always lies between 0 and 1. It cannot be negative. It cannot be more than 100% or more than 1. Agree? Basics of probability, everybody?
Tell me everybody, Yes, CC, then we are going to move to directly to now sample space 2-3 questions. Let's see how many you can write sample space. I give you some class 11th questions first, okay? Somewhere it may be class 12th also, but depends how you. CC, let's start. Let's see how many you can write sample space. Let me get a question quickly. Give me a second, okay? Suppose if I give a question like this, oh, I cannot copy here. Very nice. Okay, I'll read out. Okay, I'll put event. Let me write it. A die is thrown repeatedly until a, because I cannot copy paste, I have to write it. Until a 6 come. But now, how the sample space will look like? Who will tell me on chat or audio? 1, 2, 3, 4, 5. A die is thrown repeatedly until a 6 comes. 1, फिर उसके बाद में कोमा 1, 2, 3, 4, 5. फिर 2 कोमा मतलब 2 फिर उसके बाद ब्रैकेट फिर 1 इस तरीके से. तो देखो इसको नो यस बट दैट इज नॉट द या बंटी यू आर राइट बट द मोर लॉजिकल और बेटर वे ऑफ राइटिंग इज सी व्हाट इज द क्लोजर थिंग कि 6 आ जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा. सो या तो 6 आ गया तो स्टॉप कर दिया हमने, सिंपल स्पेल विल बी 6 डन. या फिर 1 आया फिर 6 आ गया तो डन. मतलब सबको ब्रैकेट लिखना पड़ेगा इसे. 1 आया उसके बाद 6 आ गया तो डन. या फिर 2 आ गया फिर 6 आ गया डन. या फिर 3 आ गया फिर 6 आ डन. लाइक दैट 4 आ गया 6 आ गया 5. या फिर 1 आया फिर 1 आया. यू गो टू इन्फिनाइट राइट. तो सिंपल स्पेल भी इन्फिनाइट टाइप. क्या हो रहा है? इट कैन बी 6 आ गया पहली बार में खत्म हो गया. या फिर फर्स्ट 1 आया फिर 6 आ गया तो स्टॉप. या 1 आया 2 आया फिर तो यू गेट ए इन्फिनाइट सिंपल स्पेल. 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 6. या फिर 1, 1, 6, 2, 2, 6 like that any outcome finally end with 6. So your sample space will look like this. Keep writing in a new 1, 1 or फिर 6. Clear everybody? What is sample space means? A die is thrown repeatedly until a 6 comes. तो sample space infinite हो गया ना. चलता जाएगा जब तक 6 नहीं आए. उसका 1, 1, 1, 1 आता रहे 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आता रहे. Sample space 1, 4, 5, 4 like that. So this is the way you write sample space. You will say either it is 6 फर्स्ट पे में आ गया है या फिर 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6 या फिर 1, 2, 6, 1, 3, 6, 1, 4, 6, 1, 5 like that. Okay, let's do one hour. Okay, sir. Little easier one. ये थोड़ा मुश्किल था. Suppose if I say okay, this time let me give you the easy one first. A coin is stored and then die is rolled only in case head is shown in the coin. Okay. Let me write it first. You think over it and then tell me. Question is a coin is tossed and then a coin is tossed and then a die is rolled only if
we are not doing very easy one. We are doing little difficult one. Only in case head is shown on the coin. बताओ इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? Take your time. Everybody write on the chat. Tell me sample space of this, everyone on chat. A coin is tossed and then a die is rolled if only head is come on the coin or head comes on the coin. Anyone? Shall I do it or wait? Tell me. Wait, sir. Right, everybody, what do you think? Not the probability, we are still doing sample space. Probability उसके बाद होगा. एक बार sample space clear हो गया तो. H1, H2, H3, H4, H5, H6. A coin is tossed and then a die is rolled. Only if head shows up on the coin. देखो क्या होगा? मैं बताता हूँ. You people are partially right. देखो क्या होगा? एक coin is tossed. पहले coin toss किया, तो coin पे head या tail आ सकता है. अगर tail आ गया, इसको तो ऐसे लिख देते हैं. Tail आ गया तो बात ही खत्म. Die roll नहीं करना है, right? लेकिन मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ. लेकिन अगर पहली बार ही coin toss किया और head आया, then you will roll a die. तो dice पे 1 आ सकता है. So it is not infinite. Dice पे 2 आ सकता है. Dice पे 3 आ सकता है. या dice पे 6 आ सकता है. This is your sample. मेरा सही नहीं. Okay, good. Got the idea, guys? See, it's not like direct. It's class 11, 8, 9 में simple वाले होते हैं. This is class 11, 12, where there is some kind of a complex event. क्या हो रहा है यहाँ पे? A coin is tossed and then a die is rolled only if head shows a coin. तो dice roll के लिए condition ये कि head आना है तो ही होना है. तो क्या होगा? Coin पे head या tail आ सकता है. Tail आ गया तो बात ही खत्म. Tail नहीं आया तो head आ सकता है. Head आया तो dice पे 1 आया. Head आया तो dice पे 2 आया. Head आया तो 3 आया. 4 आया, 5 आया, etc. This is the total sample. Anybody any confusion? Ask me. We'll do one more question on this. Please ask me if anybody any confusion. Any confusion, anyone? No? Let's start. Another question. Sir, पूछो. sir वो tail क्यों लिया है first में? क्योंकि coin toss किया है तो tail भी तो आ सकता है. एक coin toss करने में क्या क्या आ सकता है? Head या tail, right? So लेकिन मैंने बताया ना only if head is shown on the coin. अगर head show हुआ तो die roll करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. Okay. एक coin toss किया है और फिर बोला है कि अगर head आया तो die भी roll करेंगे और head नहीं आया तो die roll नहीं करेंगे. Okay, got it, sir. Okay. Next. So okay, ये copy paste नहीं हो रहा, बड़ा मुश्किल काम है. I have to write all this. Okay. Let me write it. Okay. This is the last question on this. Rolling a die. उसके बाद start question of probability. Rolling a die कहाँ गया? And then tossing a coin if number on die is even. Then tossing a coin if number on dice is even.
1 second, अभी थोड़ा और है. Rolling a die and then tossing a coin if number of dice even. If number of dice odd, then cost is twice. Coin is twice. Okay. If number on die is odd, then coin is tossed. इतना easy नहीं है ये. It will take a lot of time, but yeah, if you get the idea, so write a sample space for this, please, everyone. I explain. Rolling a die, then tossing a coin. If number on dice is even. If number on dice not off, sorry, odd. If number on the die is odd, then coin is tossed twice. Write your sample space. Give me idea at least how it will work. Again, I just want idea how you going to write it. Anybody want to tell on chat or sorry on audio? कोई समझाना आता है ऑडियो पे? कोई भी अटेम्प्ट? यस सर. बोलो. सर फर्स्ट 1 फिर HH फिर 1 के बाद फिर से 1 HT फिर से 1 TH के फिर बाद 1 सारे TT कॉम्बिनेशन ऑफ हेड टेल, राइट? और फिर 2 और फिर उसके बाद में 3 HH 3 HT 3 TT 3 TH बाद में 4 ओनली 4 फिर उसके बाद फिफ्थ HH फिफ्थ HT फिफ्थ TT फिफ्थ ना बट 4 पे क्या बोल रहा है? 2 पे क्या बोला तुमने? 2 पे हाँ 2 पे किसने? सिर्फ 2 ओनली 2. नो, टॉसिंग ए कॉइन इफ नंबर ऑफ डाइस इज इवन पे भी टॉस तो हो रहा है लेकिन एक बार हो रहा है. करेक्ट? ओके. हाँ यस गॉट इट. Bunty, it is not 135 just. So see what will happen, guys. Okay, I'll give you 15 seconds more and then I'll write. Listen carefully, think carefully. Rolling a die, then tossing a coin. If number of dice is even, if number of dice is odd, then coin is tossed twice. Nishta says to Nishta, unmute and explain. Sir, Can if I you roll a die and if बोले तो even comes, then the possibilities 2h, of 2t, सही है. 2, बोलो. 4 or 6. Correct. Then the coin will be tossed. The coin, if you toss a coin, then the possibilities of head or tails. Right. So with 2, it can be head or tails. 4, it can be head or tails. With 6, head. it can be head of tails. We're done with If- all evens. That is for the even sample. Correct. If it comes odd, then like 1, for example, if 1 comes, then it toss a coin, then 1 head or tails, 1 head or head, Got 1 it. That's tails. it. Understood. Very good. Yes, very good, Nishta. Exactly, she explained exactly. Anybody else? तो वही बात है. देखो, तो हम लोग इसको ब्रेक करते हैं. रोलिंग ए डाई, लेकिन कंडीशन 2 है कि इवन या ऑड. तो पहले लेते हैं इवन का, क्योंकि इवन जो इजी वाला है. इवन में सिर्फ एक ही बार कॉइन टॉस है. वी आर टॉसिंग कॉइन ओनली वंस. सपोज 2 आया, तो वी टॉस ए कॉइन, तो हेड आ सकता है. 2 आया तो टेल आ सकता है. सिमिलरली 4 आया तो हेड आ सकता है. 4 आया टेल आ सकता है. 6 हेड आ सकता है. 6 टेल. तो टेक केयर ऑल ऑफ द even number on the dice. 2h, 2t, 4h, 4t, 6h, 6t. अब now we come to the odd number on the dice. Suppose 1 आया, so we'll toss a coin twice. अब twice में क्या होगा? HH, HT, TH, TT. वो सारा लिखना पड़ेगा. HH, HT, TH, TT. This is with 1. Same thing write with 3. Same thing write with 5. Done. Tell me anybody can. Same thing you write with 3 comma this 3 comma. So 4 more will come for 3 and 4 more will come for 5. So total कितना होगा? 12, 13, 14, 15, 16, 18. 18 outcomes. 18. Is everybody clear? So these are just the examples, so you can think any simple space now. Because we have done the difficult example where this is complex event. दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड. दिस इज कंपाउंड इवेंट. सिंपल इवेंट तो सिंपल है, टॉसिंग ए कॉइन.
rolling a dice, rolling 2 dice. This is a compound event. इसलिए मैं बता रहा था. Compound event, simple event. Tell me anybody, any question. We are going to do some more problems now. Now we are going to do problems with probability of some cards, some dice, some coins, and some different type. That is what today's focus, remaining time. And then in the next class, we start with conditional probability and Bayes theorem. Okay? Please ask me any question till now. No questions? Let's start with 4-5 questions, simple one, and then we move to more difficult ones. And guys, keep asking if you have question. Don't go home with doubts. As you know, this class, I want everyone to be crystal clear in terms of what we are talking about. Let's find out the probability now. I'll give a event. Event is rolling 2 dice. Find out the probability that sum is greater than 9. Quickly, we are going to do one question each time, not in detail. Detail I already have my videos. We'll do one question each time. What if we are already getting that sum on the faces of 2 dice is greater than 9? We can do this in fingers, this kind of question. Tell me please. First tell me how many total outcomes guys? 2 dice में 36 कैसे होता है मैंने बताया. 1 dice 6 outcomes. 6 square. Yes. 6 to power 2 because we are rolling 2 dice. 3 होगा तो 6 to power 3. So total outcomes of 36 हो गया without any doubt. Clear है? Now, sum greater than 9. Sum can be 10, 11 or 12. Use this finger guys. 10 means 6 4, 4 6, 5 5. इतने 10 होगा. 11 6 5 5 6. 12 6 6. कितने आउटकम होगा 6. Done. This question take hardly 30 seconds अगर उतना स्लो कर रहे हैं. 1/6. Yes. हाँ वो तो सिंप्लीफाई करने के बाद है. That is different. That is a maths. I'm talking about probability only. Basic probability of how to calculate. Clear? Sum greater than 9. Sum can be 10, 11 or 12. 10 मतलब क्या होगा? 6 4, 4 6, 5 5. 11 means 6 5 5 6. And 12 means 6 6. 1 2 3 4 5 6. So 6 by 36 is our probability, basic probability. Okay. If I say what is probability getting prime number on any dice. Let's see how many you can do it. Same 2 dice are rolled. Prime number on any dice. Total outcome 36 and no doubt about it, right? So by 36. Let's see now. Prime number on any dice. Lohit, good question. What is the prime number or not? Sir. Anybody else? Huh, Lohit. So let's see what others says. Tell me guys, what is the prime number or no? No. No? Pakka? Composite है ना? Nah, composite नहीं है. One is not a composite number. Neither prime nor Oh. composite. Correct. Uh-huh. One is neither a prime, neither a prime nor a composite. One is not a prime. Okay. What is perfect number, guys? मैंने बताया किसी क्लास मतलब not this student my other classes. What is perfect number? है किसी को idea? No. Okay. Let's do this question first. So 1 is not a prime number. तो फिर सर 1/6 ही होगा. I don't know. Explain. Very easy, guys.
प्राइम नंबर ऑन एनी डाइस हम चाहिए, किसी एक पे प्राइम आ जाए तो इससे फेवरेबल इवेंट। तो हम लोग इस क्वेश्चन को उल्टा करेंगे टू मेक इट इजी। विल फाइंड आउट नॉन फेवरेबल आउटकम, वो ज्यादा इजी है। नॉन फेवरेबल आउटकम क्या है? जब दोनों डाइस पे नॉन प्राइम आ जाए, जैसे कि 1 1 आ जाए तो नहीं चाहिए, 1 3 नहीं चाहिए, सॉरी 1 4 नहीं चाहिए, 1 6 नहीं चाहिए, करेक्ट। इसके अलावा बाकी ऐसा टेक इट 4 4 1 नहीं चाहिए, 4 4 नहीं चाहिए, 4 6 we don't want, 6 1 we don't want, 6 4 we don't want, 6 6 we don't want this 9 event. Apart of this 9, all the remaining 27 are perfectly okay, correct. फर्स्ट पे प्राइम आ जाए, सेकंड पे आ जाए, दोनों पे आ जाए, we don't mind. इसलिए उन्होंने So कहीं नहीं देखी, किसी पे आना चाहिए जरूर। that's it, right? Bunty? Yes, sir. Yes, good. 36 minus 9 by 36. And just assuming you have a bracket in the numerator, 36 by 9 in the side bracket. That's fine. Good. Prime number on any dice means we are expecting either prime number on the first dice or second dice or on both. हाँ निष्ठा explain करो सबको निष्ठा on chat on audio. What is prime number? Sorry, what are perfect number? Perfect number is any number which will ultimately be equal to the sum of its all the divisors. Like Sum of if its you, all divisor except itself. yeah, accept itself. Like if you take 6, then it Correct. is divided by 2, it is divided by 3, and also 1. 2 plus 3 plus 1 is 6. So that is perfect number. So perfect number are those numbers. So देखो 6 is divisible by 1 2 3 and 6. Everybody agree? 6 is divisible by Yes. 1 2 Yes. 3 and 6. Forget the number itself. बाकी जो उसके divisor है, you add them, you still get the same number. So 6 is a perfect number. For example, 28. 20 divisible by 1 2 4 7 14 and 28. You add all 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14. You get 28. So 6 is perfect number, 28 is perfect. Next perfect number is some 600 something. I think I forgot 600 900. But the idea is sum of all its divisor except itself gives you the same number again. Those are perfect numbers. Okay, just because we get a question on perfect number also on the live. Okay, everybody. Yes. So that is about dice. Now suppose if I say pack of cards, how many total cards? 52. 4 suits, each suit 13 cards from A to A 2 3 4 5 6 7 9 10, J Q and K. Everybody knows picture card, fixed card and honor card. No, I'm not going to explain, that is all there. So let's, event is this, one card is picked. One card is picked at random. What is probability that neither a prime number nor a black card? Tell me. I am picking one card out of 52. What is probability that it is neither a prime number card nor a black card? Jay Surya says 0. Okay. That is an easy question in terms of confused. So Bunty and everybody else, not only about Bunty but everybody else. See, this is not a basic question. I have done whole basics of probability for in my 1 or 2 hours video where right from basic at least 100 questions. If you want to make sure you're basic, you can do that. Otherwise, these are little higher level question. So when we say neither a prime number, if you want those videos, you contact me separately. So neither a prime number nor a black card. So total cards are how many? 52. So obviously, total outcomes are 52. Favorable outcomes. No, total outcomes. So favorable outcomes are, we don't need prime number, we don't need black card. So see now, out of 52, remove the black cards first. Correct?
26 cards remain. Now out of 26 we need the prime number card all to be removed. Prime number कौन से कार्ड होते हैं? 2, 3, 5 and 7, correct? 2, 3, 5, 7. These 4 cards. 4 card black. हमको प्राइम नंबर किसी में नहीं चाहिए, मतलब ना हार्ट्स में चाहिए और ना डायमंड में चाहिए. रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड तो सब ले गए. तो 4 this goes, 4 this goes. 26, 22, 18. 18 by 52. I'll explain again. Total cards are 52. I don't want black card. 26 black card होते. Everybody agree 26 black card. So 26 is gone. So remaining are 26 red cards now. Red card means hearts and diamond. In the 26 red cards, how many cards are prime number? 2, 3, 5 and 7, correct? 2, 3, 5, 7. These 4 cards. So 4 cards of hearts and 4 cards of diamonds. 8 cards will remove more. So total 26, 30, 34 cards we are removing from 52. So probability is 18 by 52. Tell me, confusion है किसी को अभी भी या all good? जय सूर्या, yes. बंटी, good now? या वापस बताऊं? Repeat sir please. बंटी, कार्ड्स कितने होते हैं? 52. ब्लैक कितने होते हैं? 26. तो ब्लैक तो हमको नहीं चाहिए, राइट? Yes sir. तो ब्लैक निकाल दी 26. Yes sir. ये ब्लैक निकाल दी 26. अब क्या बचे? 26 रेड कार्ड बचे. Yes sir. कौन से नहीं चाहिए? और Prime number प्राइम नंबर कार्ड कौन कौन से होते हैं बताओ? 2, 2, 3, 5, 5, 7 और कौन सा? 7. और कौन हाँ सा? बस. 4 निकल गए डायमंड के, ईंट बोलते हैं हिंदी में, राइट? और 4 निकल गए हार्ट्स के, लालपन. तो ये 4 कार्ड भी चले गए, ये 4 कार्ड भी, 8 कार्ड. टोटल कितने चले गए? तो कितने कार्ड बचे? Yes sir. 18 बचे ना? 18 by 52. Right, Nishta, Manishta, Mahesh, all good? Yes sir. It is not 9 by 52, it is 18 by 52. Now, no, I'm not going one simple question. Do next now. If I change the question now, 2 cards are picked simultaneously. अच्छा, how many you already know permutation combination? Class 11th का topic है, main topic, and I believe everybody is known that, right? Permutation combination, you know that, we knew that. 2 cards are picked simultaneously. What is the probability that both cards will be of diamond? How will you do that? Not clearly? Lohit. Then what you should do is, or everybody, again, my videos are there. Instead of doing a class, you take there because they will save time. Just go for that. That's it. So permutation is very much required. Combination permutation in this. Probability of getting both diamonds. So first we'll find out total outcomes. 15. Now you have to pick how many cards? C2. You have to pick 2 cards, cards 15 C2. out of 52. So 50. use combination. Number of total outcomes is 52 C2. Picking 2 cards out of 52. That is the total outcome. No, we need both the cards to be diamond. Diamond cards कितने होते हैं? How many diamond cards है सूर्या? 13. 13. And from 13 we need both the cards. So 13 C2. 13 C2. That's it. Done. It's a 5-second job. Believe me. 13 C2 by 52 C2. So answer is 13 C2 by 52 C2. You compute now. That's it. Similarly, if I change a question and I say, what is probability getting? A queen and king. I am picking 2 cards out of 52 simultaneously. What is the probability that you get a queen and a king? Batao everybody on chat. What is the probability getting a queen and a king? Before doing this probability, your basic probability and permutation combination should be solid. Okay, so what we'll do? Is it add C2 by 52 C2? Okay,
No, Jaisurya, no. First of all, 2 cards out of 52. So 52, C2. No problem. No, we need 1 queen and 1 king. You cannot say 8 C2. 8 C2 and 4 C1, 4 C1 are different. So you cannot mix that. We need 1 queen out of how many queens? 4 queen, 4 C1. Add means multiply. 1 king out of 4 king, 4 C1. That is the answer. You need 1 queen and 1 king. 1 queen out of 4 queen, 1 king out of 4 king. 4 C1 into 4 and means multiply or means plus. 4 C1 times 4 C1 by 52 C2. Please ask me if any confusion on this. If you feel we need more probability, then we'll do more basic probability also next time, little bit. सर जी एंड का मतलब तो इंटरसेक्शन होता है ना सेट्स में. हाँ तभी तो एंड तो इनटू हो गया ना probability में. When you do and, it means this and this into this. When you do or, it is this plus this. When you do scenarios. ओके. Scenario करने वाले हम लोग, ठीक है? Is everyone Sir, okay on this? Yes, please. सर आपका वीडियो YouTube में अवेलेबल है? नहीं मेरा वीडियो अलग है, वो पेड है, but जी. it's a very one course I did AM to applied maths 2. वहाँ पे मैंने permutation भी किया है, combination भी किया है, probability भी किया है deep में. So you'll get a very 100 questions solve किए हमने. It's a very easy, but you should have that base, so you can get from me, okay? जो मैंने वर्कशॉप किया लास्ट ईयर उसका वीडियोस है वो. Yes, sir. ठीक है. So probability getting queen and king. अगर if same question if I say 4 cards are picked, listen very carefully now. Simultaneously, what is the probability of that? Each card is of different suit. कैसे निकालेंगे डिफरेंट सूट? मतलब 13C1 into 13C1 into 13C1 into 13C1 all divided by 52C4. तो पहली बात तो राइट है, 4 कार्ड चाहिए, 4 कार्ड आउट ऑफ 52, तो 52C4 कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. 52C4. अब हमको ईच कार्ड डिफरेंट सूट, मतलब 1 डायमंड का है, 1 हार्ट्स, 1 स्पेड एंड 1 कौन सा बच गया? क्लब. So every suit has 13 cards. 13C1. And I'll tell you one thing. Many people do mistake of sir 13C1, 13C1, so 4 into 13C1. ऐसा नहीं होता, right? It's not like that. 13C1 into 4 times is not 4 into that. So be very careful in terms of, though mathematically in some cases it can come same, but the concept wise it is not like this. So what this concept says? You are picking, यहाँ पे you are picking 1 card, 1 diamond out of 13 diamonds, 1 spade out of 30 spade, 1 hearts of 30 hearts, 1 club of 13 club. So you pick an and, because each card is of different suit, मतलब and 1 this and 1 this and 1 this and 1 this. So 13C1 into 13C1 into 13C1 into 13C1 by 52C4. But if I change the question again and I say same question with different flavor, if I say 4 cards are picked simultaneously, what is the probability of getting each card or cards of same suit? 4 कार्ड है, चारों सेम सूट की चाहिए मुझे. अब क्या करेंगे? 13C4 plus 13C4 plus 13C4 plus 13C4 whole divided by 52C4. Let's see what other says. Jaisurya, suit means diamond. See, in the cards you do different suits mean like diamond, hearts, clubs and कौन सा बच गया? Spade. These are suits, right? You saw that, right? Heart, diamond, eight. In Hindi, I don't know other language what we call it. I know English and Hindi. Those are suits. Each suit has 13 cards. Manishta, what will the answer for this? Manishta is there?
Nishta? Okay, Nishta also same. What about Virendra, Mahesh? So again, we are picking 4 cards simultaneously. So 52C4 is the total number of ways you pick 4 cards out of 52. Now I say all the cards of the same suit. So suppose say all the 4 cards comes from diamond. So 13 diamonds, out of we are picking all the 4 of diamond. 13C4. Now somebody was asking, right sir, वो क्या बोलते हैं, what is say what क्या बोलते हैं उसको, intersection and union. So no, it will be plus, because scenarios, either you get all diamonds or you get all hearts. So I'm using plus now because it is a or condition. All diamonds, all hearts, or all clubs, 13C4, or all spade. So big difference between or condition and and condition. When you do scenario कि ये आ जाए या फिर ये आ जाए या फिर ये आ जाए, we are doing the union, we are talking the or condition, तो plus. इंटरसेक्शन मतलब एंड कंडीशन, ये एंड ये जो पिछले केस में था वहां पे मल्टीप्लाई, दैट इज द बेसिक और बेसिक फिलॉसफी है. सो प्रायोरिटी इज 13C4 प्लस, यहां पे कर सकते 13C4, तो यहां पे यू कैन 13C4 आउट, यू से 4 टाइम्स 13C4, वो कर सकते. एग्री? यस सर. नाउ सेम क्वेश्चन आई चेंज अगेन. सी मैंने बोला 3 कंडीशन होती है, ये हुआ साइमल्टेनियस लगा. अब आते हैं same question. I'll erase 4 cards are picked one after other. देखो कितना फर्क है, one after other. ये मैंने सब डिटेल में समझाया है, but this is a summary here so that your basics are done. 4 cards are picked one after other with replacement. मतलब क्या? I pick the one card, देखा वापस रख दिया, फिर pick the second card. What is probability that all cards are red? बहुत easy है. You don't have to worry about any combination here because you're picking one at a time. तो तुमने पहला कार्ड लिया, you red आया, तो what is probability getting red card first time? ये है 26/52. आपने वापस रख दिया वो, and 26 into 52 again. फिर वापस रख दिया, फिर 26 into 52 again. तो सब लोग बताओ, इज इट डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट? Independent event. It's independent because यहाँ पे जो आ रहा है, it's not depending on this, right? Yes sir. Independent. Right, Krishna? Right, लोहित? कौन लोहित बोल रहा था, right? बंटी बोला, लोहित बोल रहा था, आवाज Bunty. Good. But if same question I change it and say without replacement, मैं replace नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन सेम है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑल फॉर रेड, 26/52 into 25/51 into 24/50 into 23/49. तो कैसे होगा? देखो, आई एक्सप्लेन टू एवरीबॉडी. यू पिक द फर्स्ट कार्ड, टोटल कार्ड 52 है, रेड आर 26, तो 26/52, एंड नो आई एम नॉट पिकिंग बैक, तो टोटल कार्ड्स कम हो गए, 51 हो गए, बट माय रेड्स आर आल्सो लेस नाउ बिकॉज़ पहले में रेड आ चुका है, तो 25. थर्ड टाइम रेड्स आर वन मोर लेस, number of cards also less, and the lastly this become my dependent event, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि पहले मेरा रेड आया ब्लैक आया. That's the problem. That's it. Any question? So what I will suggest is, no, our next class is next Saturday. You have 7 days time or 6 days time at least. Next time we are going to do difficult problems where conditional probability, Bayes theorem, all very difficult problems. Please, you come to next class, come prepared about probability in terms of all basics are done. जो भी जिन लोगों का भी basics weak है,
Either you watch YouTube or watch anywhere or take my video, does not matter. But come prepared. What we're going to do is, we are going to do conditional probability and some difficult word problems of this problem. That is what our objective. Everybody must come prepared, because my intention is not to invest time in the basics. That is to be known. Okay, guys? That is the request. So that we can go more deep and more variety of problems. Okay, sir. Okay. Any question till now, anybody? Probability? Concepts are okay. Different Yes, type sir. of event. How to find probability, how to find. We done some questions on dice, coins, and some questions on cards and balls. Now we are going to do mix in the next class. Thank you, sir, very much. Thank you, Bunty, and thank you, everyone. See you next class then. Yes, sir. Bye, Saturday, sir. same time, 2 p.m. Bye-bye.